All right. So let me know if you can view my screen, guys. I have shared my screen with everyone now. So you should be able to see it. Can you confirm quickly? You can unmute and confirm me. So because I won't be able to see your comments or messages. I'm on a Yes, different sir. screen. I Yes, we can can see your screen. All right. So let's say the question number one you have for a calculation basically the initial investment. Let's say you have made $1,000, an annual interest rate for the same investments which is at a 7%, and time period, let's say 10 years. All right. So I don't want compounding interest rate frequency. So if I simply ask you, let's say how much interest payment that you're going to earn instead of compounding, I'm asking you, it's a simple, let's say, interest calculation method. So how much interest income that you're gonna receive, let's say, next 10 years, since the rate that the company is going to pay, let's say, 7% annually. So annual interest would be 7%. So I'm asking, you guys, can you help me to understand or to know how much income that we are going to generate from these investments through simple method, not compounding? So let's calculate and tell me. Don't use GPT, don't use any AI tool which will not help you at all in your interview. All AI tools which are banned. So write it everything on paper. If you don't have a pen and paper, you can max you can use your mobile phone, but still I would prefer that you should use pen and paper. 7,000, sir. 7,000, sir. Yes, sir. For 10 years. For 10 years, right? Yeah. Yes. Yes, sir. For 10 years, 7,000. Okay. Now if I ask same questions to calculate interest through compounding frequency, then how much would be the amount? Come on. So calculate interest for the next 10 years now as per the compounding frequency, not simple. 7,700. 1,000, 7,700. 7,700. How did you calculate it? Sorry, sir. Yeah, it could be right. I don't have any, I mean, I didn't check it, but you can tell us. How did you calculate 7,700? So every year, interest, it will be, add, and then for a next year, let's say, for example, for a first year, you have a $700 as a interest because investment is only $10,000. So 7,000 would be for Oh, yeah. per annum. So next year, you need to calculate interest on again that $700 also. So it means for next year, your interest should be around $77 something. I think most of the people you guys have assumed that it's a 1 lakh dollar. No, it's a $10,000. Come on, guys, quick. You can unmute and speak.
Sir, can you repeat the question? How much is the initial amount? Here is the initial 10,000. amount, $10,000. Okay, okay. $10,000 The for 10 this years one, with first, the rate of first one. 7%. Yeah. Okay. Time period is 10. So it will be 9,671 plus 10,000 our initial amount. Total would be $19,671. Okay. Let's calculate it. Almost it will be double the in. I have calculated it. So please check. Yes, sir. Initial This is investment, $10,000. Final amount, 19,671.51. Total yes, sir. interest earned, 9,671.51. Rishi, can you explain to everyone how did you calculate this? So basically, have used the formula amount equals to principal into 1 plus r upon n, then bracket में n into t. N basically means number of times interest, number of time interest is compounded per year. So we have 7% per annum, which means 7% is once per year. So 7 into total time duration is 10. Oh, sorry, n equals to 1 and t equals to 10. Then our power would be 10. Total formula अपना आएगा 1 second, sir. Principal amount is 10,000. Mm-hmm. Then we'll multiply by bracket में 1 plus r upon n. R is rate of interest, which is 7%. N is number of times, 1. Then power आएगी हमारी 10 plus 10. Yes, sir. So the formula would be 10,000 into 1 plus 0.07 is to the power 10. Then sir ये हमारा आ जाएगा 10,000 into 1.967 something or 10. So this is how I calculate. I can I share share in your WhatsApp? Put it in chart. I mean, see, Okay, I'll there are put it in. different ways to calculate this. People even they can break down this simply. They can calculate interest for every year separately, and then Okay, on the okay. same amount they can charge it. So that's how also you can achieve the same numbers. Equals to. So put everything in the chart so that other people can also understand it, how to calculate it. Okay, sir. I'll drop it in the chat. All right. So let's take the another example for liquidity ratio. Can anyone tell me first, how do we calculate liquidity ratio? Come on. How do we calculate liquidity ratio? We have discussed everything. So now I'm not going to discuss what is liquidity ratio and all. Can you tell me, guys? This is so easy, and still, if you take a time to answer this, Current asset divided by current there are asset. two things. One, the audience is very इसको बोल सकते हैं कि भाई attitude वाली है कि now I don't want to speak whatever it is. If this is the case, then it's not good for you in corporate then. And second thing would be कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है. Things are happening, you're just participating, but you're incapable to understand it. But आप जब तक बात नहीं करोगे, so how can I help you? So anyways, I don't want to give up preach now on this part. So can come on guys, can you tell me quickly? So how can we calculate liquidity of a business? Divide by current assets divided by current liabilities. Good. So now let's calculate this in this case then. You have a current assets, you have a current liabilities, inventory, and cash equivalents. So you have these items with number.
So can you help me to calculate liquidity ratio? See, if you answer quickly, we'll practice, we'll take more and more questions. If you just, stuck with one, then hardly would be able to cover 10 max. So I have prepared 50, around 50 So the questions. answer will be 2. 5 lakh divided by 2 lakh 50. If I'm But right. we have inventory and cash equivalents also. So why did you means only consider current assets? But the liquidity formula is current CA divided by CL. CA divided by C. What is the definition of current assets? Definition of current asset Current like asset. liquid asset for a company. So then inventory and cash equivalents can't be treated as a liquid assets then? Yes, you're correct. Calculated guys, quick. It's a KBC. If you answer this question, I'll give you another lifeline. I think I'll have to launch a show for Q&A, finance Q&A. Finance Crorepati. Three, sir. 3. Let's calculate. Okay, sir. So why it says 2? Quick ratio, which is at 1.60, and then current ratio, which is at a 2. So I'm assuming this formula didn't capture the inventory and cash equivalents, right? Because only consider current assets and current liabilities. But cash and cash I equal. guess, I guess inventory and cash equivalent include in this current asset, so that's why it has been excluded. Sir, I am included cash equivalent, sir. So there. It should include, but maybe the algo which I prepared, maybe the code didn't capture it. But anyway, Sir, the total is 7,50,000 and the liability are 2,50,000. Then 7,50,000 divided by 2,50,000, then comes 3, sir. yes, 3 is the correct answer. So these are the loopholes of guys AI. Okay, so AI always cannot be right, so don't try to check answers on AI. All right, so now tell me profitability ratio. How can we calculate profitability ratio? Profitability of the business. Come on. How can we calculate? Any guess? है कोई super intelligent Yes, sir. in this? Profitability ratio. Sir, gross profit divided by, I think gross profit divided by sale into 100. This is gross profit ratio. That is gross profit ratio. Okay. So can you try to calculate with these numbers?
Okay, so let me now clarify it to you. So can you help me to calculate return on assets? Come on. So Okay. you have total assets, Yes, sir. you have total sorry, net profit, right? So now Yes. tell me, how can we calculate, or what, let's say, what would be ROA in this context then? Return on assets. One second. I'll calculate. Net profit upon shareholders' equity, which is 9 lakh. Oh, no, no. See, I asked about return on assets, not return on equity. Okay, okay, sorry. Net profit upon total asset into 100. Yeah, calculate and tell me. Total asset is You have total assets and even total steps. shareholders' equity. So calculate that. So next, following to this, next question would be, please calculate net profit margin. Two questions that I have asked. One is net profit margin, and another one is return on assets. Third question following to this, Re- I would ask on return on equity. Please calculate return on equity as well. Return on asset is math. 40 by 3, somewhere between 13 point something, 13.33. Okay. What about return on net profit margin? Return on net profit margin. No, no, sorry. Return on equity is separate and return on net profit margin is separate. So there are three questions. One is return on assets, another one is net profit margin, and third one is return on equity. Okay. Return on equity would be sir, return on equity is 22.22. Uh, and s- so what was your third question? I have calculated return on asset, return on equity, and the third one is Net profit margin. Yeah, net profit margin. ROA, ROE, and net profit margin, NPM. P upon N. And the fourth question I want to ask about gross profit margin. Also tell me the gross profit margin in this context. I will give you 5 minutes max because there are five questions. So 1 minute is 1 minute is enough for each question. Come on.
We have a 2 minutes remaining, guys. Sir, our NPM is 10. Okay. So what about Next, gross profit margin. gross profit margin, GPM? Give me a minute. I'm calculating. Gross profit is 88 lakhs. Mm-hmm. All right. So last 1 minute. Otherwise, I'll hit on calculate profitability ratios. And all Gross ratios. profit margin is 40. Sir. Gross profit margin is 40. 40. 40. okay. So let me calculate then. You can cross verify. Net profit margin, which is at a 10. Yes, sir. Sorry, net profit margin, which is at a 10. Gross profit margin, which is at 40%. Operating margin at a 15%. Then ROA, return on asset, Is 13.3. Yes, sir. 30.33. And ROE, which is at a 22.22%. Yes, sir. Yes, sir. All are correct. Good job. ऐसा कोई है कि सबके सब फेल हो गए? Is there anyone accountable who accept कि भाई मैंने पूरे के पूरे गलत जवाब दिए हैं? I would appreciate. और I कोई haven't calculated operating margin, but yes, I did NPM and GPM and ROA and ROE. okay. तो जो लोग नहीं बोल रहे, so I'm assuming that कि आपने या तो परफॉर्म किया है या नहीं किया है. दो ही केस हो सकते हैं. It's a probability. क्योंकि आप नहीं किया है सर, आरओई आरओए निकल गया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में फंसे हुए थे. okay. So net profit margin अब पता चला? या should I? बेसिकली सर जो भी मार्जिन निकालना है उसको ऊपर जैसे नेट प्रॉफिट निकालना तो Net नेट प्रॉफिट profit divided with revenue. So it is नेट से pretty yes sir simple. नेट सेल profit. इनटू 100 बस. Yes, net profit you can divide with revenue. Like we have to calculate operating margin, then we have to put operating income on the top, then divided by net sales into 100, right? Yeah. Oh, okay. Got Net, it. the net profit divided by revenue, then multiply by 100. For which one? Operating? No. Which For net profit. net profit margin? For a net profit margin, net profit divide by revenue. Net sales. Yes, sir. Net sales, which is revenue. So you have a revenue of here, I think Tell 2 us million. return on assets, sir. Can you please explain once again? Return on assets, net profit, you can compare with total assets. In this context, total assets you have like 1.5 million, and total net profit, which is at the net income, that becomes your total net profit. So total net income you can compare with total assets. Means net income divide by total assets into 100. सी अब सवाल ये होगा कि वाई वी आर कंपेयरिंग विथ 100. अगर आप 100 नहीं रखोगे तो परसेंटेज में चीज़ें नहीं आएगी. Percentage नहीं आएगा. So 100 is basically, we are here talking about ratios, and ratios would be in percentage basically, 10%, 20%, Yes. 100%. But in a finance, ज़्यादा तौर पर परसेंटेज यूज़ नहीं होते, बेसिस पॉइंट भी यूज़ होते हैं. बेसिस और परसेंटेज में फ़र्क ज़्यादा है नहीं है. बेसिस में बस 1000 एंड 10,000 का बेस पकड़ के कैलकुलेट करते हैं. मतलब 100% हो जाएगा 10,000 and 10% हो जाएगा 1000 basis points. But anyways, that's a different thing.
Okay, sir. Understood. Okay, all right. So now let's jump on leverage and debt ratios. So my question is for everyone. Can you help me to calculate debt to equity? Listen this very carefully first. Note down somewhere. So can you help me to calculate debt to equity, then debt ratio, equity ratio, interest coverage ratio, all right, interest coverage ratio, and debt to capital ratio. So there are 5 questions. So let me reiterate again: debt to equity ratio, debt ratio, equity ratio, interest coverage ratio, and debt to capital ratio. All right. So please calculate this and let me know. I'll give you 5 minutes. But if you post, answers to one by one would be better. Sir, can you please share again, sir? Please note down this. Okay, sir. Sir, the debt to equity ratio is 66.67. Okay, good. Debt to equity ratio, debt ratio, second, debt. Debt to equity ratio, debt ratio, Okay. then equity ratio, interest coverage ratio, and debt to capital ratio. These are 5 ratios which I want to calculate, and the data is in front of you. Leverage and debt ratio data you can refer. And to calculate these ratios, we need total debt, total assets, shareholders' equity, EBIT, Debt to equity ratio, debt ratio, capital ratio, and debt to equity, debt ratio, equity ratio, interest coverage ratio, and debt to capital ratio. Anyone genius here who have posted all the questions answers? Sir, debt to equity ratio is 66.67%, Mhm. and debt ratio is 40%. I'm calculating equity and remaining. Okay. 2 minutes left. Equity ratio is 60%. 66.6. Interest coverage. EBITDA. 25 lakhs. Interest. 70%. Debt to capitalization. Which is 15.6. 1 minute left. Yes, sir. All done, sir. Sir, debt to equity is 66.67. Debt ratio is 40% and equity ratio is 60%.
interest coverage ratio is 70% and debt to capital ratio is 40%. Right. Last 30-second. Okay, so let me calculate then ratios. Debt to assets, which is at a 40%, debt to equity 0.67, equity multiplier 1.67, time interest earned 7x, long term debt to equity 0.44. Sir, But in our context, I had asked questions debt to equity. So debt you can compare with equity. Here you don't need to multiply with 100 in this context. It's just a comparison. sir, when we say interest coverage ratio, then uh, You can in your compare with answer, you have a interest expenses, right? So yes, sir. interest expenses you can compare with EBIT. This one. Yes, sir. Earning before income and tax. Yeah. Sir, but I am asking that in your answer it shows 7x, matlab 7 times, right? But Hmm. my answer is 70%. I have multiplied by 100. Don't multiply it. Whatever. So in Okay, this got it. context, Got it. you don't need to multiply by 100. It is 700 actually, 7 times. Okay. Yes. 700, it means 7x basically. Yes, sir. Okay. Got it. So anyone needs any clarity, please go ahead and ask. So what is equity multiplier? So equity multiply basically this is it's a debt to the equity. Wait, so here the equity multiplier, why did it just pick one? So it's a equity ratio only, which I'm assuming. So equity, but there is a debt to equity, the equity multiply, but multiply with which? Is it a debt? Let me check. Multiplier with what exactly they're multiplying? I guess this is calculating on the basis of return Yeah, size. Yes, total yes, assets sir. compared with Yes, sir. total If assets. we are investing 100 rupees, then will be getting 167. Yeah, so formula is total assets divided by total equity. So we have a total assets. We are comparing with assets. Sometime even we compare with investments also. So, sir, let's say if we are investing 100 rupees, then we will be getting 167, right? Or Yeah. will be getting 100 plus No, 167. no, 100. See, the point here is if you compare the debt total assets with the total equity which you have. So what it means, your total assets value, which is a high, means for per equity, you have something 1.67. Right? It's not about getting or having value. It's basically if you have a total assets of 15 lakhs, so that assets, if you compare with total equities, what you have in your business. So the basically your equities value, which is at 1.67. सो अदर वे अराउंड, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एसेट्स ज़्यादा है देन द इक्विटी, और इक्विटी वैल्यू की जो इक्विटी कैपिटल की जो अभी की वैल्यू है वो 15 lakhs है, बट उसको अगर मुझे समझना है कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा, सो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड इट? सो उसको समझने के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा. सो विच आई एम सेइंग, लुक माय इक्विटी विच इज़ एट 1.67. अगर ये मैं कहता हूँ कि अब मान के चलो, लुक एट दिस, see the equity multiplier which is at a 2. Why? Because your assets now, which has been doubled, right?
अगर एसेट्स को घटा के मैं इतना कर लेता हूँ, now in this context, so your equity value which has been depreciated, guys. So मतलब क्या हुआ, you invested 9 lakhs in a business, but now that 9 lakhs worth which is at a 8 lakhs only. So your business which is at a risk. What if, let's say, the context here is the actual asset which is at a 5 lakhs and shareholder equity which is at same remain, let's say 9 lakhs. So business which is at a high risk. Why? You don't have any assets. What if you have a zero assets and you have in your shareholders equity which is at a 9 lakhs? So there is no equity multiplier. Why? अगर वहाँ पे assets ही नहीं है, so assumption is we haven't invested it. So सवाल ये है, when you invest it, let's say you have invested and the investment or total assets which is at value which is at a 10 lakhs. So इसका count कैसे होगा फिर? कैसे होगा? Total assets which is at a 10 lakhs. And shareholders, see, actually shareholders equity, it means it's your investment. And total assets, it means you can say it's a market value of your investments. You invested 9 lakhs and your value which is at a 10 lakhs. So you're comparing basically 10 lakhs with 9 lakhs. And always keep one thing in mind, your total assets, it should higher than the shareholders equity. So it means your investment which is in a profit. That's how we basically assume. I have one more question. Yeah. सर यहाँ पे टोटल एसेट चेंज होने से हमारा ये दो चीजें तो चेंज हो रही थी, इक्विटी मल्टीप्लायर और डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट टू एसेट रेशियो, ये तीनों चीजें चेंज हो रही हैं, बट टाइम इंटरेस्ट अर्न इज नॉट चेंजिंग बिकॉज यहाँ पे लेट्स से अगर किसी बिजनेस में इंटरेस्ट ज्यादा भी आ रहा है तब भी इट डजंट मीन कि वो बिजनेस अच्छा है और बुरा है ना। नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, अभी इक्विटी ही नहीं है तुम्हारे पास, तो लॉन्ग Yes. टर्म डेट जो है इट विल बी, यू विल बेसिकली बिकम इंसॉल्वेंट इन दैट केस. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, हाई रिस्क. एंड if you see, if I reduce all my assets, it says infinity, so it means it's a high risk and we don't have any assets to cover the interest expense. तो सर टोटल एसेट शुड बी मोर देन द शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट? Yes, क्योंकि इंसॉल्वेंसी के टाइम पे यहीं से कवर होता है शायद से, ऐसा है कुछ? exactly. ओके ओके, गॉट इट। इफ लेट्स से अगर हमारे पास 4.5 लाख ही है तो हम आधा ही रिकवर कर पाएंगे बिजनेस, राइट? Yes. Now, if you want to simply understand, look at this. If I keep the total assets which is at a 6 lakh, still it says 100% risk. 100% रिस्क अगर For a debt लॉस to हो तो assets, for a debt to assets, it says 100% risk for a debt to assets because you have a assets and debt equal. But if अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तब भी वही बात आएगी, आई गेस ना? नहीं 9 रखेंगे तो चेंज होगा ना. इफ यू सी 9 रखेंगे तो फिर वी आर ओके इम्प्रूविंग, वी आर इम्प्रूविंग. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल डेट है 6 लाख है. ठीक है, वी आर इम्प्रूविंग. बट इफ आई नाउ लेट्स से change the scenario, total assets value which is at 18 lakhs, it says moderate. But if I improve this, like let's say 30 lakhs total assets we have, it says conservative. So it means which is at a good. So in terms of investment decision, guys, always check the total assets with shareholders equity value, and that you can compare with total debt. Debt ज़्यादा है, asset कम है, do not invest. Debt, it should lower, and total assets or shareholders equity, it should higher when you compare with total debt.
You should only invest in those businesses. सर एक क्वेश्चन और है Yeah. सर, जैसे पी रेशियो की बात करें अपना, तो जितना कम पी रेशियो रहेगा उतना बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना? Yes. Why? Because सर understand this. Why? Because P ratio we compare with the market price. Price to earning. Price means market price. Earning, it means the total profit that we are talking about. How much company has generated profit from the operations. इसकी बात हो रही है. और जब आप कंपेयर करोगे, सो इट शुड रीजनेबल ना. जैसे कि अभी 19 टाइम्स का मतलब क्या है कि भाई 19 to 20 टाइम्स इट शुड बी योर पी, राइट? यही तो अजम्पशन है, प्रोबेबिलिटी. इसका yes sir, मतलब क्या है? बट सर आई वाज आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन. मैं क्लास में था, किसी से डिस्कशन हुआ था कि अगर पी रेशियो कम ज्यादा भी है बट अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तुम्हारी ग्रोथ ज्यादा है और पी ज्यादा है, तो तुम बेट ले सकते हो उसमें. सी अल्टीमेटली ग्रोथ इट मीन्स अर्निंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. यस सर, मे बी अभी करंट स्टेज में उसका पी रेशियो ज्यादा है, कल को जाके कम हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ग्रोथ इज आल्सो हाई. लेट्स से कि हम किसी एआई P कंपनी के ऊपर itself it इन्वेस्ट करना talks चाहते about हैं. growth. First यस सर. understand this. P itself it talks about growth. Market price. See, P का एक factor which talks about market price. दूसरा factor it talks about earning. Growth यस सर. मतलब क्या? Business is generating more and more revenue. So यस सर. वो solid होना चाहिए. If it is in a solid position, so then definitely you should look for it. ओके. See, ultimately I'll tell you कि जितने भी financial ratios है, वो ये कभी गाइड 100% तरीके से नहीं करेंगे कि आपको कि इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. लेट्स से यू हैव सीन वेयर कंपनी इज growing, year on year or quarter on quarter. You have seen, let's say, 20 to 30% growth on yearly basis. So you should invest. Why not? अभी जैसे अब उदाहरण ले लेते हैं. जैसे इफ यू टॉक अबाउट पी रेशियो ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अब उस कंपनी के लिए ना एक ग्रोथ स्टैग्नेंट बन गई है. दे डोंट हैव एनी प्रोडक्ट. आगे स्केल करने के लिए जगह ही नहीं बची है. 3,000 रुपीज समथिंग द द प्राइस ऑफ टाटा कंसल्टेंसी कंपनी शेयर्स इन मार्केट. नाउ इफ यू आस्क मी, उनका जो मार्केट कैप है विच इज एट अ 15 lakhs crores फॉर 3,000 rupees per share price. So from this level to push company, let's say to the 6,000 rupees per shares. So कंपनी का मार्केट कैप 30 lakhs crores का होना चाहिए, then it is possible. Am I right? यस सर. यस सर. But to push the market cap from 15 lakhs to 30 lakhs crores, company need double capacity of human resources. Now I think they have around 5 lakhs, but they need a 10 lakhs people, double the infrastructure, then double the client size, then it is possible. Am I right? But in this competitive age, do you really think that they'll achieve 30 lakhs crore market cap? I think no. And that's when if you see a growth in last 2 to 3 years, I haven't seen any growth in Tata consultancy services. I haven't seen. Even go and check. Average might be that stock would have delivered 5 to 6% return max. यस सर. So it means So sir, itself what it are the talks main about growth. main ratios that we should always focus on? One is P ratio and the remaining are? These are the, I mean, key ones. See, profitability and all, which talks about growth, the Yes. liquidity and all, it helps you to understand their business लिक्विडिटी challenges. रेशियो बेसिकली मींस मतलब जितना अच्छा लिक्विडिटी रेशियो होगा उतना सिक्योरिटी अच्छी रहेगी ना? Yeah, business means would be in a good position basically. यस सर. In that way, you can learn it.
Profitability is for something, if you don't want to read numbers, so you should quickly check the ratios. Okay, how business is growing. So in a percentage you can try to understand it. अभी हर बार वो 20 लाख 50 लाख 60 लाख ऐसे pronunciate नहीं कर पाएंगे ना. So that's what Yes. we have a profitability ratios. So यहाँ पे कोई ऐसा descent वगैरह कुछ है ही नहीं है. So first you should check the industry, the net profit margin or gross profit margin and all. And then second, you can compare the competitors with the company which you want to invest for. That's all. It's a comparison. Okay, sir. And in terms of leverage, this is something, guys, it's a crucial part, I would say. Everyone must check the total assets, total debt, total interest expenses, and long term debt. Why? इसमें अगर गड़बड़ हुई, your company will collapse. प्रॉफिटेबिलिटी का स्टिल भी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा. इट्स डिपेंड्स ऑन द मार्केट सर्कमस्टेंसेस. बट अगर कंपनी के पास एसेट ही नहीं बचेगी, सो अल्टीमेटली लॉसेस अगर आते हैं तो कंपनी की एसेट्स इरोड होती है. सो दैट्स द वन ट्रिगर पॉइंट. एंड यू शुड चेक द लीवरेज एंड डेट्स. दिस एक्चुअली कंट्रोल योर एंटायर बिजनेस. लीवरेज अगर ज़्यादा हो गया, कंपनी डूब जाएगी. नो वन इज गोइंग टू सेव कंपनी. सर एक क्वेश्चन और आ गया दिमाग में. यस. लेट्स से सर कोई एक्सवाइजेड लिमिटेड है और वो काफी पिछले 2 3 4 5 साल से लॉस अगर कर रही है, तो सर उसका इम्पैक्ट डेट टू एसेट रेशियो में पड़ेगा, राइट? कंटिन्यूअसली अगर वो लॉस पोस्ट करती है कोई भी कंपनी, ओके. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो लॉसेस कहाँ से जा रहे हैं. कैपिटल से ही तो जा रहे हैं. जो आपके आपके पास हाँ, जो कैपिटल है, ऐसी बात है, बेसिकली कैपिटल यू आर से जाएगा. स्पेंडिंग, यू आर बर्निंग योर मनी, यस सर. राइट. सो वो बर्निंग मनी जब तुम्हारा कैपिटल बर्न हो रहा है, सो यू हैव अ लाइफ लाइन मैक्स अप टू 9 lakhs. वो बर्न हो गए मतलब देर इज अ जीरो एसेट्स और कैपिटल इन द बिजनेस. सो नाउ यू आर अ बैंकरप्ट. लाइफ लाइन सर 9 लाख थोड़ी हो सर, इसमें तो 30 lakhs होगा ना. टोटल एसेट इज विल बी. ठीक है, 30 lakhs भी इवन इफ आई कंसिडर, बिगिनिंग में तो तुम्हारा इतना ही होता है. ये हाँ, तभी फिर बढ़ता ऊपर है जब इक्विटी तुम्हारे रहेगी. पास प्रॉफिट है. टोटल एसेट्स तभी बढ़ता है जब तुम्हारे पास कंटिन्यूअसली यू हैव जनरेटेड प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस. सी, at a very initial stage, how it looks like scenario: 9 lakhs shareholders equity, 9 lakhs your assets, no other anythings. Okay. You have invested 9 lakhs, you have assets which is at a 9 lakhs. And this is a descent. Let's say your business generated profit around 1 lakh, now calculated, and that profit you have converted into, let's say, your assets. So your total assets should be 10 lakh. Yes sir. See, the scenario started changing, right? Let's say later on you started taking debt, total debt, and so on that date you are paying, let's say, 10,000 interest expenses. See, still says you have a lower debt and your company which is at a descent stage. Let's say you started, I mean, companies continuously paying interest and they have a huge losses in the business, and their condition is like now 9 lakhs, around total debt. Yes sir. Look at this. That says your business which is in a huge risk. अब इसका मतलब क्या है? For example, let's say this date you have taken from me. This date you have taken from me. ठीक है? So इसका Yes sir. मतलब ये हुआ, in your business, your percentage is just 10%, Yes sir. Yes sir. and remaining is mine. So if you see this, Indirectly आपका ही हुआ वैसे तो, but yes, when you cross 51%,
मैं पूरे अधिकार रिंस्टेट कर लूँगा, मैं लीगली तुम्हारे साथ बैटल करके आई टेक द कंट्रोल ऑफ कंपनी एंड आई फायर यू। सो इसलिए कहते हैं कि डेट लेते समय मेक श्योर दैट यू आर नॉट यू नो कोलैटरलाइजिंग एवरीथिंग। और बहुत बार जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ट्रैप में आ जाते हैं। द सेम थिंग हैपन विद बाइजूस। उसको लगा कि भाई 2,000 करोड़ आ रहे बिजनेस में तो क्या ही घंटा फर्क पड़ेगा, सो आई विल एंजॉय 2,000 करोड़ एम्पायर एंड रेज ही स्टार्टेड रेजिंग 2,000 करोड़। जब 500 करोड़ आ गए तो उसकी पूरी बिजनेस की ऐसी की तैसी कर दी। See, even huge cash is also not good. If you have a huge cash flow and if it is to, Debt to equity ratio always should be lesser than 0.5%, right? yeah, for a decent business, look at this. आपका ऐसे है तो it is a decent. For example, let's say, so total debt would be 5. so 0.5. this is, I would say, just it's a decent. Right, you Yes, have a interest 50%. expenses of 1 lakh and you have total debt of 4 lakhs. This is a decent situation. But if you try to increase more, so now in this context, your equity is with you, your 100% equity value is just actually 50%, and your debtors they are holding 50%. So जैसे मान के चलो तुम्हारे पास कोई कार है, तुमने लोन लिया है, 5 लाख का लोन Yes. लिया, 5 लाख खुद डाला है, तो उस Yes. गाड़ी पे द ओनरशिप वुड बी 50-50, right? 50 Yes, sir. yours and 50 your insurers who have actually sorry the lenders who lent money to you to purchase a car. Business भी वैसा ही है, business it's an asset. If you have a business, ऐसे ऐसे केसेस में अगर लेट्स से इंसॉल्वेंसी आती है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है अगर बिजनेस में, तो आगे जाके फिर हमें वापस तो करना है ही डेट, है ना, डेट। तो उस टाइम पे सर जब 50-50 ओनरशिप है तब उस टाइम पे क्या डिसीजन लिया जाता है? मतलब आधा आधा कैपिटल निकाल के वापस करना है क्या, कैसा? there are a lot of strategies to be honest. बहुत बार ये होता है कि रोल ओवर किया जाता है डेट को, सो इट मीन्स आई ट्राई टू कन्विंस यू, लेट्स से यू आर माई लेंडर, आई ट्राई टू कन्विंस यू एंड आस्क यू टू कन्वर्ट दिस डेट इनटू इक्विटी, सो बिजनेस के ऊपर डेट ही नहीं रहेगा। हाँ, उसमें हालांकि ये होगा कि डेट रीपे का प्रेशर कम हो जाएगा लेकिन मेरी इक्विटी कम हो जाएगी। जैसे यस, my इक्विटी equity would डाइल्यूट हो be जाती है फिर। 50% and my lender's equity would be 50%. That is a one strategy, that comes under restructuring. दूसरा ये होगा, I'll approach to the new lenders and roll over the debt. So it means I'll ask them to, hey, please give me 5 lakhs or 6 total 5 lakhs because I want to hand it over to someone else. And new debtors आके उसमें बिजनेस में बैठ जाएंगे, पुराने निकल जाएंगे। ये भी होता है। थर्ड ये होगा कि भाई एसेट, बिजनेस के एसेट्स विच आई कैन सेल इट आउट इफ आई हैव अ एसेट लेनी एक्स वाई जेड, लेट्स से मे बी लैंड, ऑफिस और एनीथिंग एज सच। जैसे there was a news like BKC office, the Reliance Group sold to XYZ and raised funding and return that money, ऐसा ऐसा करके। अभी वो जो न्यूज़ है, वाई देर इज़ नो बिग लाइमलाइट ऑन दिस गाय, आई डोंट नो, बट उसने लोन तो करोड़ों में लिया है। कांग्रेस गवर्नमेंट डिसबर्स around 60 to 70,000 crores loans to that guy, and he has just written around 500 crore or 1,000 crore something and announced bankrupt. This is ridiculous, but anyways, so businessmen they have different strategies, and at the end क्या होता है, if let's say if that continues goes high and high, समझ जाओ कि वो बिजनेसमैन पीछे हट जाएगा, वो बोलेगा ठीक है, आई सरेंडर माई इक्विटी, आई सरेंडर माई इक्विटी, आई सरेंडर माई पर्सनल प्रॉपर्टीज इफ आई हैव एनी। और पर्सनल प्रॉपर्टी के नाम पर इनका कुछ नहीं होता है, सब भतीजा ये वो, बिकॉज लीगल लॉ में एक प्रोविजन है। So for example, let's say your dad has taken loan, means personal loan from HDFC Bank, right? And let's say suddenly what happened, you lost your dad maybe in an unfortunate event. So now HDFC banks, they cannot come to you and ask for a recovery because it was see that loans comes under contractual obligations as per the, Okay. I think there is a contract act, Contract, yes, sir.
उसका क्या है, इस टाइम क्या है, आई थिंक 1872, सॉरी 1972 और 32 कुछ है. So there is a contract, contract, it's a contractual obligation, and that contract, it cannot be transferred to the hearers of the borrower. Yes, sir. So ये वो उनको पता है चीज, but maybe in the on the ground, maybe HDFC's the recovery team, they may force to the family or other persons, will drag you in court, will do this, will do that, but वो टिक नहीं पाएगा case. I have seen thousands of cases where the banks, they tried to force family members for a credit card debt or for a personal loan debt और for a business loan, वो ट्रांसफर नहीं होता है liability, जिसके साथ है उसके साथ ही चला जाएगा. Yes. So ये उनको पता होता है, बट ये गेम है एक्चुअली. My suggestion would be to summarize this. Look, if you have a decent cash flows, decent, it means very decent cash flows. जैसे EBITDA तुम्हारा पॉजिटिव है, you are generating let's say maybe 100 crore, 50 crores प्रॉफिट आ रहा है, एंड अब तुम डेट के लिए देख रहे हो, तो देखो, लेकिन मेक श्योर कि तुम्हारी कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए कि इफ समथिंग लेट्स से गोज रॉन्ग, दैट यू कैन एटलीस्ट repay debt and protect your business. बट बहुत बार क्या होता है कि अर्ली स्टेज में डेट के थ्रू ही कैपिटल रेज किया जाता है स्टार्टअप फाउंडर से. Yes, दिस the इज seed funding stages में. अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, आई वुड से. हाँ, सीड फंडिंग फिर भी विच इज अ फाइन, बिकॉज लेटर ऑन दे allow you to translate or restructure that loans into equity, but तुम्हारा equity dilute होगा, वो अलग बात है. सीड But फंडिंग के टाइम पे सर एंजल इन्वेस्टर्स ये सभी तो रहते हैं बस, है ना? yes, और ये वीसीज वगैरह जो आते हैं ये अर्ली स्टेज में आते हैं, आफ्टर सीड फंडिंग स्टेज. yes, right. So ये कई सारी चीज़ें हैं उसमें अगर आप देखोगे तो. So इसमें कई सारा डिस्कशन हो सकता है, बट लेट्स कवर फ्यू मोर्स. सर यू हैव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट. जो सर सेकेंडरी मार्केट है उससे पहले मैंने सिर्फ बोला था कि आईपीओ वाला पार्ट रहता है, देन आफ्टर आईपीओ इट कम्स इन द सेकेंडरी मार्केट. तो सर आईपीओ वाले पार्ट से पहले भी ये वाले स्टेजेस रहते हैं ना, सीड स्टेज और ये लार्ज, सॉरी, अर्ली स्टेज और लेट ये. वो तो बहुत पहले होता है. इट्स ए बी, सी इन अ बिजनेस यू कैन सी A to Z, ABCDXYZ, right? So all means initial activities that happen in a primary market: Yes, deal sir. sourcing, deal research, deal सर acquisition. वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में यही ये कैसे दे, मतलब क्या क्या होना चाहिए था? हाँ, अगर देखो, देर आर वेज, कोई ऐसा सिस्टमैटिक वे नहीं होता कि ये कहो या वो कहो. सो पॉइंट इज, यू शुड precisely tell, look, primary market, it means where companies sell the securities to the investors directly. That market we can call it as a primary market. And Okay. secondary market, which talks about when company actually list securities on a stock exchange like BS and NSE, where investors, they can buy and sell securities in between them, like buyer and seller, they can deal themselves to Okay. maintain the तो सर liquidity. आईपीओ वाला पार्ट सेकेंडरी मार्केट में ही आता है, राइट? IPO, which is, नहीं, IPO की प्री स्टेज जो है, IPO application and all, that comes in a primary market. जब आईपीओ लॉन्च होता है वो वो वाला प्राइमरी, पार्ट सेकेंडरी मार्केट में है? नहीं नहीं, प्राइमरी है. जब लिस्ट वो भी होता है प्राइमरी. सिक्योरिटीज, एक्चुअली लिस्ट होता है, दैट कम टू द सेकेंडरी मार्केट. ओके. तो सर मतलब जब आफ्टर जैसे क्या लिस्टिंग, नाम है, आफ्टर लिस्टिंग, that everything will happen in secondary. लेट्स से जीएमटी आपका वाला ही है, जीएमटी लिमिटेड है, वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है. तो जो नॉर्मल पब्लिक है वो उसमें बिड लगाती है, मतलब अपना नॉर्मल अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए. तो वो वाली स्टेज भी इनिशियल में ही है Primary, yes, it is a part of primary market. कि वो भी प्राइमरी में ही है? Yes. ओके ओके. And then once the securities are listed on a stock exchange, then that part comes under secondary. व्हेन ट्रेडिंग स्टार्ट्स हैपन, राइट? Yes. Then investors, uh, they would be allowing to trades in securities, buy, sell, transfer, short सर sell. देयर इज वन मोर थिंग
common in most of the companies that after IPO, most of the VCs take exit from the company. Yes. So why this happens? मतलब if the company is good, if let's say अभी क्या नाम है It's not, see, you should not ask why. First, understand it. Let's say you have invested in company since last 10 years. अब तुम ये कह रहे हो कि I don't want my money back. Well, then why did you invest then? अगर कहीं पे exit ही नहीं है, so when will you test the return from investment then? ओके बेसिकली VCs का मोटिव क्या नाम है कंपनी के साथ बने रहना नहीं है और No, नॉर्मली उनका मोटिव उनका प्रॉफिट है कि भाई लेना है. ग्रो करना है कंपनी फ्रॉम 1,000 रुपीज टू 1 करोड़, एंड 1 करोड़ के हिसाब से वो आपको बेच के निकल जाएंगे. बेसिकली उनका बस मोटिव यही है कि आई एम इन्वेस्टिंग जस्ट टू गेट द प्रॉफिट. IIFL Securities booked 4,800% profit in IRCTC share. यस सर. IIFL Securities. It's a private equity fund. आपने कित Yes, IIFL Securities. It's. I'm not talking about broking. I'm talking about private equity. यस सर. उनका एक private equity scheme है. They run for a rich investors. They're one of the, I think, series 9 something, the private investment series. They had invested in IRCTC shares and they booked around 4,600% profit in just 5 years of time span. अब आता हूँ मैं रियल गेम के ऊपर. Now your question is, sir, then why they are, means why they are taking exit? They are taking exit Sir, because they are if taking if exit I am because VC at this they have already make fool to you and convince you, look, you should invest in IPO. Look, you should invest in IPO. अगर आप उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो आईपीओ में तो उनको उनका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, एंड दे नो इट वेरी वेल. yes sir. So sir, basically VCs are taking money Back from this thing called IPO, investor. from us, right? Yes, Okay, exactly. got it. I want to ask one more thing, sir. Most of the IPOs जब आ जाते हैं, लॉन्च हो जाते हैं, तो उसके बाद वो 10 से 12% यूजली फॉल दे देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में. ठीक है. या तो 10-12% का अगेन और रिटर्न देंगे. पीपल लोग कहते हैं कि अरे ये तो 20% 30% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है. ठीक है, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया. जब वो चीज होती है तो VCs भी पैसा लेके निकलते हैं, राइट? तो उसी वजह से वो फॉल क्रिएट होता है मार्केट में, राइट? Yes. ओके, गॉट इट. उसको बचाने के लिए देयर इज अ वन प्रोविजन व्हिच इज ग्रीन शो ऑप्शन. ग्रीन शो ऑप्शन इट मींस कंपनी ऑफिशियली हायर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू purchase the securities to control the price. Why? Because अगर सडनली मान के चलो फ्री फॉल आ गया मार्केट में, यस. and if continues, let's say if shares price goes down, then it would be difficult for a company and investors to make. नहीं सर, इतना बड़ा फॉल नहीं है यूजुअली. वो ऐसा रहता है कि लॉन्च हुआ और थोड़ा सा फॉल आया था, वो 10-12% के नहीं आसपास. गाइस, ये तो बिग ट्रैप है. 6 महीने तक, 6 महीने तक, लिसन दिस वेरी केयरफुली, 6 महीने तक इफ यू पार्टिसिपेट इन आईपीओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ बिग इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट them. If they invest in any IPO event, they cannot sell their securities in the next 6 months. Their securities will be in lock-in period. सर दिस इज फॉर HNIs, HNI, mutual funds, not for, that's what I said, not for retail investors. नहीं तो retail investors मर जाएंगे, फिर वो नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए क्या होता है कि बहुत बार स्टॉक में बिगिनिंग में प्राइस थोड़ी बहुत गिर भी जाए, लेकिन वो सस्टेन होती हुई दिखती है कहीं ना कहीं पे, वो रेसिस्ट कर पाता है. एंड आफ्टर 6 months when the HNIs they started selling off, and then suddenly we think what is happening suddenly, because it was going everything well, and then stock price started falling down in the market, just because now the HNIs they are allowed to sell, so they directly sell to the common people and get out of from the stock. yes sir, because I saw this in Tata Technologies. If you remember, the IPO was somewhere around in 2024, Hmm. I guess.
नवंबर 2024 समवेयर अराउंड दिस डेट। जब वो लॉन्च हुआ था ना सर, उस समय जिस दिन लॉन्च था सिर्फ उसी दिन का गेन था। आई स्टार्टेड नोटिसिंग दिस स्टॉक 16 to 17% के आसपास प्रीमियम में लॉन्च हुआ लिस्टेड प्राइस से। देन वो फॉल कंटिन्यू रहा है तब से लेके अभी तक, ठीक है। और प्राइस समवेयर अराउंड 724 रुपीज, ठीक है। उस समय रूमर ये थे टाटा मींस ट्रस्ट, टाटा का तो ट्रस्ट है, ये वो इन्वेस्ट कर लेते हैं आईपीओज में, ये वो। तो काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया था इस टाइम पे। तो जब से लेके अभी तक ये फॉल में ही है। लेट्स से अगर किसी ने आईपीओ होल्ड भी किया होगा अभी तक, तो It 40 wasn't, it 50% ऑलरेडी wasn't ड्रॉन। IPO. It was like, see, through that IPO, if you go more in details and see, there wasn't cash in for Tata Technology. Basically, Tata Motors, TCS consultancy services, and I think JLR unit something, the company, they sold the securities from the Tata Motors to the public and liquidated their investments at a higher value. ये कितना यस बड़ा सर, ब्लंडर है, यस यस तो हम आई लोगों को रिमेम्बर लग रहा है कि ये पैसा तो टाटा टेक्नोलॉजी को जा रहा है। नो, दैट। यस सर, यस सर, बिकॉज़ दे आई गेस दे वर क्लियरिंग देयर डेब्ट्स आई गेस। यस, बाकी की कंपनीज बोल रही थी हमारा पैसा रिलीज करो भाई, रिलीज करो, रिलीज। सी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द आईपीओ वेदर इट इज अ गुड और बैड, फर्स्ट सी two things. One is company in profit? If the answer is yes, and still if company want to, let's say, dilute stake, still my question, would be same like if the company is good, if you are generating profit, then why are you diluting your stake? यस सर, So as a founder, maybe they don't have a trust on their business, यस सर, and उनको लग रहा है कि अब यहाँ से निकल जाओ, किसी और business में जाके बैठ जाओ. This is what they are looking for, a dilution of a stock. यस सर। ये यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे, वो हार्डली एक यस या सर, दो ये होंगे. क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी पूछा था अपने पीजीडीएम पे। तो दे सेड कि विल डिस्कस इट लेटर, बट बताया नहीं था उस समय। क्यों बताएंगे, पता ही नहीं है तो बुक्स में कहाँ पे है ये चीज. यस यस Second thing, you should again see, if any company is in a loss, and if still they want to list their securities on a stock exchange, it means it's a clear indication of their debtors, they are forcing to the founders to list a stock and allow them to liquidate it, क्योंकि उनको उनका पैसा बैक मिल जाएगा. अगर ये सिनेरियो है, डू नॉट इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक. माफ करना, मैं हिंदी में कुछ चीजें बोल रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज द कॉन्वर्सेशन यू आर पुशिंग मी ऋषि, बट देयर ऑडियंस इन दे वांट इन इंग्लिश. जब कोई कंपनी जब आईपीओ के लिए आती है, यानी दैट कंपनी इज नॉट अ प्रॉफिटेबल एंटिटी, ओके राइट, समझ जाओ कि उनको मार्केट में कोई पैसा दे ही नहीं रहा है, भीख दे ही नहीं रहा है. एंड दैट्स व्हाट नाउ दे आर अप्रोचिंग पब्लिक थ्रू आईपीओ. This is the reality of IPO events. even I said the same thing in the class, but the teachers was like कि नहीं, this is the process to grow, और क्या नाम है आगे, मतलब ज्यादा grow करने के लिए this is the process we Agreed, have to follow agreed. some। But they have, I mean, see, it's an approach. That's what I said. If the company is looking, see, company is profitable, and now company management, they have a confidence on their business model, so they can generate more and more revenue, but they need a capital. Still, see, they are a profitable entity. वो जो भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम इतने पैसे में इतना कैपिटल, इतना प्रॉफिट बना रहे हैं. मतलब मान के चलिए, इनिशियली दे इन्वेस्टेड 1000 crores एंड दे आर जनरेटिंग 200 crores प्रॉफिट फॉर पर annum. बट नाउ द क्वेश्चन इज, उनको यहाँ पे 200 crores से अगर 1000 crores प्रॉफिट बनाना है ईयरली, सो दे नीड कैपिटल. एम आई राइट? yes sir, अगर कोई कंपनी ये कहती है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दैट आईपीओ. और यही एक जो वे है, दुनिया को बता दिया जाता है, नो 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 नो, कंपनी वांट टू ग्रो, दैट्स व्हाट दे आर रेजिंग कैपिटल. yes sir, I agreed, but what about others where company want to repay the debt of existing investor, and that's what they are raising capital from public? So what makes sense यार? ये तो fraud है. आपकी बिजनेस डेट में है, now you are raising capital from public.
एंड यूट्यूबर्स आके आपको ज्ञान देके चले जाते हैं कि नो 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 दिस कंपनी इज गुड, यू शुड सी यूट्यूबर्स एज अ ऑलवेज ओपनली raise my voice. Everyone is getting paid for it. यूट्यूबर्स, Yes. ब्रोकर्स, एंटिटीज, बैंकर्स, मीडियाज, जो अनिल सिंह भी वहां पे बक 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 करता है ना, ही इज अर्निंग कमीशन एंड पैकेट्स फ्रॉम द Yes, sir. कंपनीज एज वेल. Yes. Yes, sir. इनकी जाके कभी पीएनएल. Sir, how to identify any company or any IPO comes यू और कैन फिर यू कंपनी कैन से स्टेट वो निकालना चाहता हूँ, सर आइडेंटिफाई कैसे करें सर? दैट्स द बिग क्वेश्चन and I have no answer for it. Why? Because the data which companies they're posting on a platforms, XYZ platforms, no platform owner, even maybe अपनी technology बना रहा हो, to post all of this data, but still I'll first highlight this. We are a technology provider, will not take any accountability of data. जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है वो यही कह रहा है, आई एम जस्ट एन अकाउंटेंट, आई विल नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी टू यू नो confirm or let's say give you 100% assurance that this data would be like 100% accurate. The consulting firms, they are also saying the same thing. Whatever numbers that we have received, we have audited on the basis of this. Now अगर किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे लगे भी, तो किसको पता है कि एक्चुअली मीन्स हाउ मच अमाउंट दैट दे हैव अर्नड. क्योंकि गवर्नमेंट लाइव डेटा नहीं मांगता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लाइव डेटा नहीं मांगती है. सी इंडिया नीड्स अ लाइव ट्रैकिंग सिस्टम फॉर अ फंड यूटिलाइजेशन. लाइव ट्रैकिंग सिस्टम Sir, एवरी डे कितना कैश बर्न हो रहा है, इवन फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट कंपनीज, एवरीथिंग इट शुड ट्रैक. क्योंकि आप पब्लिक का पैसा यूटिलाइज करते हो. आईपीओ में क्या हो रहा है? सी इफ यू डिपॉजिट योर मनी विद अ बैंक और इफ यू इन्वेस्ट योर मनी इन कैपिटल मार्केट थ्रू आईपीओ, विच इज इक्वेलेंट, इट्स अ पब्लिक मनी. अगर मान के चलिए कल बैंकों ने अदानी को 1,000 करोड़ दे दिया और अदानी डूब गया, and on other way around you have invested, means lakhs of investor, let's say invested millions of dollars or rupees in Zomato company, and if Zomato company also अगर डूब जाता है, which is equivalent. Why? भाई मैं एफडी में रखूं या स्टॉक मार्केट में रखूं, मेरा पैसा तो सेफ होना चाहिए. yes, sir. आप ये नहीं बोल सकते कि Yes, नहीं मैंने एफडी करी, वो बैंक ने अदानी को दिया और यहाँ मैंने खुद डाल दिया. बट एनीवेज बोथ दे हैव चीटेड अस. डोंट गो ऑन परसेप्शन, डोंट गो ऑन न्यूज. Yes, sir. This is very true, sir. वो ट्रूथ फाइंड करने के लिए हमें जड़ पे जाना पड़ता है, और वो इस दुनिया में हार्डली मिलेगा, बिकॉज द डेटा विच इज ऑलरेडी बिन टैम्पर्ड एंड दे हैव forced it for their benefit. Now let's come to the reality. जो नंबर्स वैल्यूएशन में लेके आते हैं, मैजिक नंबर्स लेके आते हैं आईपीओ में, एंड दैट्स व्हाट दे सोल्ड टू अस, राइट? एम आई राइट? वो Yes, नंबर sir. कहां से आ रहा है? वैल्यूएशन गेम कहां से आ रहा है? वो वैल्यूएशन नंबर कहां से आ रहा है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द सोर्स. व्हाट इज द सोर्स? ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट आप ये कह रहे हैं कि माय बिजनेस इज जनरेटिंग लेट्स से 400 crore losses for per annum, and on other hand you are saying look, my business valuation is 1 lakh crore, and that's what we are selling that equity to you as per the current valuation. एक लॉस मेकिंग बिजनेस का वैल्यूएशन आप किस बेसिस पे निकाल रहे हो? रूबी 1 लाख करोड़, जहां पे बिजनेस की रिपे की भी कैपेसिटी नहीं है अगर पैसा लेता है तो. सी सेबी नीड अ लॉट ऑफ मींस वर्क अराउंड, बट सेबी की कैपेसिटी इतनी कम है कि वो इसी में उलझे है. आईपीओ अप्रूवल, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस, इसी में उलझे पड़े हैं, और इट विल टेक एटलीस्ट 100+ years टू गेट मोर ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट. और सबसे इंपॉर्टेंट, सेबी के किसी भी व्यक्ति के पैसे का नुकसान नहीं होता है, बिकॉज दे नो इट वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट. जितने भी बिग इन्वेस्टर्स है, पपेट है, दे डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटीज.
वो जब इन्वेस्ट भी करते हैं ना, तुम्हारी एसेट मांगेंगे पहले, डू वन थिंग, कोलैटरलाइज योर एसेट्स, आई विल गिव यू मनी टू यू। कितने बड़े इन्वेस्टर्स है जिनका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एंड स्टॉक मार्केट में करना दोनों अलग बातें हैं। कंपनी में करते तो डेट के थ्रू जाते ही है, बोलते कि लुक, आई वांट 15% रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट, आई विल गिव यू 10 crores, गिव मी 1 crore एवरी ईयर। दिस इज व्हाट डेट कम इनटू पिक्चर। वो जितने भी बड़े लोग हैं डेट में खेलते हैं, और हमको ज्ञान देते कि आप इक्विटी में खेलो। क्यों? बिकॉज इक्विटी बोला कैपिटल तो इज यही जाता ना कि दोनों सेम। परमानेंट कैपिटल फॉर देम। ये सबसे बड़ा पॉइंट है एजुकेशन, शिक्षा पे, क्योंकि रियल ज्ञान दिया ही नहीं जाता यार। इवन सीए सीएफएस, उन्हीं का सबका सेम ही हाल है, उनको वही चीज पढ़ाई जाती है कि जो हमको पढ़वाया जा रहा है किसी से। Why don't you tell the truth of financial system, that the businesses that are taking money from the market, and you are saying that this market is पैसों का कुआं for us, it's a filmy dialogue, and this is, you know, millions of लोगों के घर उजाड़ रहा है। Why don't you tell the truth? आज बिजनेस देखो, बिजनेसेस को फंडिंग चाहिए। माय ओनली क्वेश्चन इज, सो मैं भी एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, उसी में आता हूँ मैं भी, बट माय ओनली द कंसर्न इज विद, इफ यू आर रेजिंग मनी फ्रॉम द पीपल, बी अकाउंटेबल, डोंट मैनिपुलेट विद द नंबर्स। होता क्या है ना कि लॉस मेकिंग एंटिटी को आपके गले में बांध दिया जाता है, उसको आईपीओ कहा जाता है। नाउ यू टेल मी, हिंदी में कहावत है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अगर आपके घर में है तो आप उसको काट के खाओगे? नो सर, नो। या आप आपके नेबर को जाके बोलोगे, लुक, मेरे पास एक मुर्गी है और वो सोने का अंडा देती है और उसको मैं आपको देना चाहता हूँ आधा आधा, आप ये बोलोगे उसको? नहीं। फर्स्ट तो आप ही ट्राई करोगे ना उसको मार मार के कि कितने अंडे आपको देगी, सो दैट यू कैन सेल एंड बिकम अ रिच। एम आई राइट? यस सर, यस सर। लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड करके रखेंगे। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे आपको सेल करने के लिए आ रहे, देर आर जेन्युइन बिजनेसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बिजनेसेस फेक होते हैं, देर आर जेन्युइन बिजनेसेस, बट उसमें से, नाउ आई विल कम टू द कंक्लूजन। In this world, everything is based on, guys, probability. Everything, हमारे जन्म मृत्यु से लेकर के फाइनेंस, योर क्वांटम थेरीज, योर स्पेस टेक्नोलॉजी, या सी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, everything is all about probability. So in a stock market, you should apply the law of probability of truth. How? Whatever numbers that you have, you should verify it first, and then do a research about company, about allegations, about their business models, and so, and उसके बेसिस पे खुद एक कंक्लूजन पे आ जाओ। आपको पता चला कि ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट नंबर्स के भी, चलो 10-10% एवरी क्वार्टर ग्रोथ हुई है, एवरी ईयर हुई है, एंड देन you should think like, okay, if I invest my money in this company, at least that I can expect, there is no surety, but at least I can expect 10% appreciation in my investment. So 10 साल में मेरा पैसा दोगुना हो जाएगा। If I invest 1 lakh today, after 10 years my investment would be at, maybe let's say, 2 lakhs. Why? Because the business has a profitability of 10% every year, and if I compound it, it might goes around 2.5. So this is what, we call it as a probability. जैसे यहाँ से जो स्पेस में लोग जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो लैंड ही होगा। इट्स अ प्रोबेबिलिटी, होगा, बट नहीं हुआ तो वी कांट डू एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। एम आई राइट? Yes, sir, yes. All of the market depends on probability. Yes. So, I mean, do your probability testing or analysis, whatever that you have, and then accordingly you can take the decisions.